Hello everyone. So today we'll be discussing another CAT 2024 slot 1, right? It's a very interesting set because if you look at the set, it will look like a DIU, right? Graph hai, values वगैरह कुछ conditions हैं, right? It's something, it looks like a DI set, data interpretation, right? Okay. Now let's proceed and see the set actually belongs to which topic and from which area. Okay, chalo, let's see. The chart below provides complete information about the number of countries visited by Dilr, Samantha, Nitesh in Asia, Europe, and rest of the world. Okay, perfect. So here, as we see, Dheeraj. So Asia is solid, Europe is dotted, and rest of the world is the stripe wala bar, right? Okay. So Dheeraj visited 3 countries in Asia, then Dheeraj visited 7 countries in Europe, and Dheeraj visited around 1 country. Dheeraj visited 1 country in rest of the world, excluding Asia and Europe. Similarly for Samantha, in Europe it is around 9 countries, then in rest of the world she visited 4 countries, and Nitesh in Asia he visited 1 country, in Europe Nitesh visited 6 countries, and in rest of the world Nitesh visited 12 countries. Okay, fine. Let's have a look at the condition. The following additional facts are known about the countries visited by them. Okay, fine. 32 countries were visited by at least one of them. So there are 32 countries where at least one of them has visited it. Okay, fine. Look at the next condition. USA is the only country that was visited by all 3 of them. ये किस टाइप का लैंग्वेज है? Visited by 3 of them. आगे देखते हैं. China is the only country that was visited by both Dheeraj and Nitesh but not by Samantha. किस टाइप का लैंग्वेज है? France is the only country outside Asia which was visited by both Dheeraj and Samantha but not by Nitesh. Half of the countries visited by both Samantha and Nitesh. Do you see a resemblance over here of the topic Venn diagram? The conditions are written in a language which we generally use for Venn diagram, right? अच्छा, चलो ये तो थोड़ा समझ में आया कि हमें यहाँ थोड़ा सा Venn diagram करना है. कैसे करना है? तो it is given that USA is a country that was visited by all 3 of them, and that also USA is present in rest of the world. China is present in Asia and so on. So can I say the diagram will be something like this? Area specific, for example, Asia, and visited by Dheeraj, visited by Neeraj, and visited by Samantha, right? Because all 3 of them, how can you design all 3 of them? Only when these 3 circles represent Dheeraj, Samantha, and Nitesh. So this region will be representing all 3 of them. Okay, so the diagrams will be having 3 diagrams. We'll be having 3 diagrams, and the 3 diagrams are for the area specific. One diagram is for Asia, one diagram will be for Europe, and one diagram will be for rest of the world. Okay, so Dheeraj, Samantha, and Nitesh. Dheeraj, Samantha, Nitesh. Dheeraj, Samantha, and Nitesh. Okay, Asia, we had the values, just got erased. Let me take a different color. Okay, so Dheeraj we have here 3. Then Samantha, it is Asia is 0. Here if you observe Samantha, there is no Asia. Then for Nitesh it is 1. Okay, then Europe, Dheeraj it is 7. Okay, Samantha it is 9. Then Nitesh it is 6. Then rest of the world, Dheeraj it is 1. You see here 1 over here, right? 1. Then Samantha it is 4, and rest of the world is 12 for Nitesh. Nitesh के लिए rest of the world is 12, right? Done. ठीक है.
Now moving on to the conditions. First condition, 32 countries were visited by at least one of them. What do you mean by these 32? How does this 32 resemble in your presentation over here? मतलब ये जितने भी यहाँ पे ये जो how many regions are there here under Asia? 3, 3, 6, 1, 7. 7 regions. Here also you have 7 regions or 7 values will be there. Here also you'll be having 7 values, right? So the sum of these 7, 7, 7, मतलब the sum of these 21 values should add up to 32, right? So at least one of them means what? None में ये जाएगा नहीं. ये जो 32 countries है, none. मतलब a country which is visited by none of them is not among these 32, right? So 32 will be somewhere within the regions over here, within the circles over here. ठीक है? Okay. सबका addition जो है total जो हमारे कितने 21 variables will be there, but I am not going to write the variables. We'll see if variables are required or not. So the sum of these 21 regions should be adding up to 32. ठीक है? चलो next. USA in rest of the world is the only country that was visited by all three of them, right? So visited by all three of them एक ही आएगा, that is USA. And it is not saying that in rest of the world USA is the only country. It is saying USA is the only country that is visited by all three of them, and USA is one of the countries in rest of the world. That means Europe may be visited by all three of them will be 0. Asia may be visited by all three of them will be 0, because USA is the only country that was visited by all three of them in rest of the world. That is additional information कि USA is a part of rest of the world. Okay, fine. चलो. So under rest of the world, if here I have 1, तो can I say the remaining values for कौन है? धीरज, ये आपके 0 हो जाएंगे, क्योंकि धीरज का टोटल देखो यहाँ पे कितना है? 1 है. धीरज का टोटल आपका 1 है. फाइन. ओके, चलो let's move on to the next condition. China is the only country that was visited by both Dheeraj and Nitesh but not by Samantha. Okay, China और कहां पे आएगा? China एशिया में आएगा. Dheeraj and Nitesh but not by Samantha. So there is one country, that is China, and China is the only country that is visited by Dheeraj and Nitesh but not Samantha. मतलब बाकी सारे regions में this value will be 0. राइट, तो ऑलरेडी रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में तो ये ऑलरेडी 0 है ही, तो आपको बस यूरोप में भी इसको क्या करना है? 0 कर देना. डन. ओके, देन फ्रांस इन यूरोप इज द ओनली कंट्री आउटसाइड एशिया. ओके, फ्रांस इज द ओनली कंट्री आउटसाइड एशिया. ओके, फाइन. विच वॉज विजिटेड बाय both धीरज एंड समांता बट नॉट बाय नितेश. तो फ्रांस कहां पे आएगा? यूरोप में. धीरज एंड समांता बट नॉट बाय नितेश, मतलब यहां पे 1, एंड दिस इज फ्रांस. ओके, सो दिस इज द ओनली कंट्री विच वाज विजिटेड बाय धीरज एंड समांता बट नॉट बाय नितेश. और वो भी बोल रहे हैं आउटसाइड एशिया. Why outside Asia? Because inside Asia all these values are already 0, because Samantha's total is how much in Asia? 0. So Samantha's all these values are already 0 inside Asia, right? So outside Asia ये जो region है धीरज एंड समांता बट नॉट नितेश, यूरोप में ये एक 1 आएगा और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में 0 ऑलरेडी आ चुका है, अलग से बोलने की जरूरत नहीं है. ओके, चलो लेट्स सी व्हाट ऑल वी कैन कंक्लूड बिफोर यू गो टू द लास्ट कंडीशन. सो कैन आई से यहाँ पे इट विल बी 2, सो दैट ये 3 आपका एड अप हो जाए. 2 + 1 2 + 1 3 हो जाए. ठीक है, और नितेश का यहाँ पे 0, क्योंकि नितेश का टोटल यहाँ पे कितना है? 1 है. ओके, डन. ठीक है, नेक्स्ट कैन आई से अंडर यूरोप धीरज का यहाँ पे 6 आ जाएगा, बिकॉज ऑलरेडी हियर वी हैव 0 0 1 दैट एड अप्स टू 1, एंड दिस 6 मिला के इट विल गिव यू 7 ओवर हियर. ओके, चलो ये तो हो गया. ठीक है, लास्ट कंडीशन. Half of the countries visited by Samantha and Nitesh are in Europe, right? So visited by Samantha and Nitesh means what? This area, ये वाला एरिया, राइट? और एशिया में तो ये वाला एरिया 0 है ही, तो इसको आप साइड ही कर दो. देन हियर दिस एरिया. तो बोल रहा है half of the countries visited by both Samantha and Nitesh are in
यूरो, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आई विल टेक ए ब्लैक पेन, ठीक है। Let's say here I have one country visited by Samantha and Nitesh, right? So here Samantha and Nitesh are visiting how many countries total? 2, right? तो इधर भी आपको 2 डालना पड़ेगा, because half of those countries visited by Samantha and Nitesh are in euro. That means here you will be having 50% and here also you will be having the another 50%. मतलब these two values, this value and this value should be equal. Getting a point? This value and this value should be equal. Okay. In other words, if I say here I have x and here I have y, then the scenario is something like this: 0 plus x should be equal to 1 plus y. Then only 50% will go here and 50% will go here, right? Okay. Or I can say x should be equal to 1 plus y. Now, how do we get this value of y? I do not have any more conditions. This will be purely based on hit and try. Okay. Okay. Can I put 0 over here? Let's see. If I say no, nothing, 0. That means here I will have 1. Done. Okay. So here I will be having 8. Here I will be having, here I will be having 7. 7 plus 2, 9 हो जाएगा. और यहाँ पे मुझे 6 चाहिए. So this will be 5. Then here I will be having 3. And here I will be having 11. This is the scenario. Right? Okay. Now, just add up the green values. ठीक है. If you add up the green values, एशिया में यहाँ पे टोटल 3 हो जाएगा, वो तो फिक्स है. यूरोप 7 is fixed, this 7 is fixed, ठीक है. बाकी फिक्स नहीं है. 3 plus 7 कितना हो गया? 10 हो गया. और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में ये जो 1 है, ये आपका फिक्स है, राइट, जो ग्रीन में. Basically, you can say this y I have taken this 7 fix. Yes, 6100 there in green. So that is 7. 7 फिलहाल तो फिक्स है यूरोप का, और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में 1 हमारा फिक्स है, ठीक है. So 1. Now there is the information. The sum of these 21 regions should be how much? 32, because 32 countries were visited by at least one of them. अभी देखो फिलहाल कितना है? 3 plus 7 10. 10 plus 1 11. 11 कंट्रीज का तो अपना पक्का हो गया कि कहां पे कौन आएगा, राइट. सो हाउ मेनी कंट्रीज आर रिमेनिंग? 21 कंट्रीज. तो ये जो दिस रीजन, दिस एंड दिस 6 regions should add up to 21. This 6 regions should add up to 21. Let's see, are they adding up to 21? 7 plus 1 8, 8 plus 5 13, 13 plus 11 already 21 क्रॉस हो रहा है. So this will be the base of my hit and trial. Okay, चलो. So what we tried, I have taken 0 here. तो 0 से तो नहीं हो रहा है, 21 क्रॉस हो रहा है, ठीक है. तो एक काम करते हैं, 1 लेके देखते हैं. 1 मतलब यहाँ पे कितना? 2 आ जाएगा, यहाँ पे 10 आ जाएगा. Then here I will be having 2, then here I will be having 6, and here I will be having 4, right? ठीक है. चलो देखते हैं. 10 plus 1 11 to 12, 12 6 18 to 20 24 जा रहा है. पहले देखो 21 से बहुत ज्यादा था, अभी 24 पे आया, थोड़ा सा ज्यादा है 21 से. चलो ठीक है, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पॉसिबिलिटी. लेट्स गो फॉर 2 ओवर हियर. तो हियर आई हैव 1, हियर आई हैव 9, राइट. हियर आई हैव 3, हियर आई हैव 5, एंड हियर आई हैव 3. लेट्स सी व्हाट इज हैपनिंग नाउ. So 3 3 6 6 5 11 11 9 20 22 23. अभी भी 21 से थोड़ा ज्यादा है, राइट. चलो ठीक है, लेट्स मूव टू द लास्ट पॉसिबिलिटी. क्योंकि यहाँ पे 3 डालते ही क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा. सो दिस विल बी व्हाट? 0. तो मतलब ये वाला जो वैल्यू है 3 से ज्यादा तो नहीं हो सकता. दैट मींस दिस शुड बी आवर लास्ट ट्राई. तो 1 3 4 4 8 12 ये सेटिस्फाई होना चाहिए. वी डोंट हैव एनी अदर चॉइस, ठीक है. तो ठीक है, ये हो गया. देन हियर आई हैव 4, दैट मींस हियर आल्सो आई हैव 4, हियर आई हैव 2. लेट्स सी. 4 4 8 8 to 10, ओके. 10 8 18 3 21. यस, डन, राइट. सो बेस्ड ऑन हिट एंड ट्रायल वी डिड फाइंड आउट द values of the remaining regions also. Done. That completes your entire solution. ठीक है. So in my classes also I always inform, suppose you are
ड्रेन्ड आउट ऑफ द कंडीशन, आपके कंडीशन सारे खत्म हो गए, फिर भी कुछ पेंडिंग क्वेश्चन, पेंडिंग एरियाज रह गए जिनका वैल्यूज नहीं आया. What you should do here in this process, in the process of solving, I didn't do that, but you guys should do what? Focus on the questions. Questions क्या है? How many countries? Definite question. ये भी definite question. Okay, start answering the question. Suppose ये मेरे values नहीं आए, right? 244,830 ये मेरे values नहीं आए. I'm drained out of the condition and I'm not getting की how to proceed any further. Let's see how many questions can I answer. How many countries in Asia were visited by at least one of Dhiraj, Samantha and Nitesh? अच्छा, एशिया में ऐसे कितने कंट्रीज हैं जो कम से कम धीरज, समांता या नितेश के द्वारा विजिट किया गया हो? सो एशिया वी हैव टोटल 3 कंट्रीज, सो दे वर विजिटेड बाय एट लीस्ट धीरज, वन ऑफ धीरज, समांता और नितेश, राइट? सो यहाँ पे 3 आ जाएगा आंसर आपका. देन हाउ मेनी कंट्रीज इन यूरोप वेर विजिटेड ओनली बाय नितेश? नाउ डू आई नो दैट आंसर? नो, आई डू नॉट नो द आंसर. मतलब आई नीड टू फाइंड दिस वैल्यू. ठीक है, ओके, देखते हैं. Then how many countries in the rest of the world were visited by both Nitesh and Samantha? Do I know that answer? I need this value. मुझे टोटल पूछ रहा है, right? But ये वाला वैल्यू तो मुझे चाहिए, ये मुझे निकालना है. ठीक है. How many countries in Europe were visited by exactly one of Dhiraj, Samantha? मतलब exactly one. This value, this value and this value. Okay. So the questions indicate कि ये जो blank spaces हैं उनके definite values निकलेंगे. Then you should scratch your head, यार निकलना तो है डेफिनेट, कैसे क्या निकलेगा? कोई कंडीशन छूटा क्या मेरे से? हाँ, एक कंडीशन आपसे छूटा जो आपने 32 आपको यूज अभी तक नहीं किए. यू हैव नॉट येट यूज्ड दिस 32 वाला कंडीशन एंड यू हैव नॉट यूज्ड द हाफ ऑफ द कंट्रीज वाला कंडीशन, राइट? देन यू कैन स्टार्ट थिंकिंग हाउ टू प्रोसीड एंड हाउ टू डू दैट. तो हिट एंड ट्रायल वगैरह आप स्टार्ट कर सकते हो. सो डोंट पैनिक इफ योर सोल्यूशन इज इनकम्प्लीट. Take the help of the questions and get some idea कि ठीक है, मेरा solution अगर incomplete है तो will it remain incomplete or will it be filled up? So the questions are giving you idea that it should be filled up. Start filling it up. Think how to fill up, right? And when you start doing hit and trial, आपका scenario ये आपका complete हो जाएगा, right? So this will be your final scenario over here, 5, 4 and this will be 2. तो आपका scenario क्या होगा? Complete हो गया. ठीक है. So once this is done, we can answer the question. First, second question. How many countries in Europe were visited only by Nitesh? Only by Nitesh, 2. How many countries in the rest of the world were visited by both Nitesh and Samantha? Rest of the world visited by both Nitesh and Samantha, 4. Right? Okay. Then how many countries in Europe were visited by exactly one of Dhiraj, Samantha and Nitesh? यूरोप में exactly one. यूरोप में exactly one मतलब 6 plus 4 plus 2, that is 12. Option A. Okay, that completes our entire solution. So the set looks like a DI set, but it turned out to be a Venn diagram set. ठीक है. So make it a habit. Read the conditions before you conclude कि आपका प्रेजेंटेशन कैसा होना चाहिए, कौन से टॉपिक से रिलेटेड है. अब पहले एक बार शांति से सारा कंडीशंस पढ़ लो, देन यू थिंक अबाउट हाउ टू प्रेजेंट एंड हाउ टू सॉल्व. ठीक है, चलो. सो गाइज, इफ यू आर लाइकिंग माय वे ऑफ एक्सप्लेनेशन, आपको पसंद आ रहा है, समझ में आ रहा है, देन आई एम एक्सपेक्टिंग कि प्लीज डू हिट द लाइक बटन एंड प्लीज डू सब्सक्राइब टू द चैनल ऑल्सो, बिकॉज बीच में आई एम ऑल्सो शेयरिंग सेल्फ मेड क्वेश्चंस ऑल्सो, तो वो भी आपको मिलेगा प्रैक्टिस के लिए. ठीक है. सो आई एम एक्सपेक्टिंग अ सपोर्ट फ्रॉम यू ऑल. थैंक यू. टेक केयर. हैव ए गुड डे.